और अब से कुछ she देर में or he is कार्यक्रम शुरू होगा। occupying to one of the प्रधानमंत्री नरेंद्र podiums मोदी, placed on either side of the उपराष्ट्रपति सीपी speaker's chair. राधाकृष्णन वहां पर A पहुंच copy चुके of the हैं। form for oath or अब से कुछ देर affirmation में जब in राष्ट्रपति accordance द्रौपदी with the मुर्मू वहां third पर schedule to the पहुंचेंगी Constitution तो of India, कार्यक्रम वहां as पर the शुरू case किया may be, जाएगा। will be kept for the आज का जो use ये of the अवसर है member. वो भारत The द्वारा member will संवैधानिक face the House while मूल्यों making the और oath or लोकतांत्रिक परंपराओं affirmation के and then प्रति wish अपनी the chair. प्रतिबद्धता की पुनः Thereafter, पुष्टि का the member प्रतीक will है। proceed to show the original election आज के कार्यक्रम की certificate अगर हम बात at the करें table of the House तो and राष्ट्रपति sign द्रौपदी the मुर्मू इस roll समारोह of की members अध्यक्षता which करेंगी is placed on the और table. इस दौरान Now, भारत के Secretary General. उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और साथ प्राइम ही मिनिस्टर दोनों श्री सदनों के नरेंद्र सांसद मोदी, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और साथ ही दोनों सदनों पर सांसद कुछ देर में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। शुरू होगी लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री दोनों सदनों के सांसद कुछ देर में जहां के कार्यक्रम शुरू होगी लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री दोनों सदनों के सांसद कुछ देर में जहां के कार्यक्रम शुरू असमिया भाषा जो में लोग असमिया पुस्तिका सच्ची सामाजिक आर्थिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। भारत सामाजिक विश्व का आर्थिक विकास सबसे जीवन परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। माना जाता है भारत सामाजिक विश्व का संविधान का सबसे जीवन परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। माना जाता है सामाजिक विश्व का संविधान का सबसे जीवन परिवर्तनकारी हमारी सामूहिक शक्ति राष्ट्रीय एकता ईश्वर और की जन शपथ लेता कल्याण हूं के कि मैं लक्ष्य विधि की द्वारा स्थापित सशक्त भारत के संविधान अभिव्यक्ति के है। प्रति आज हम सभी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का रखूंगा। सामूहिक मैं लक्ष्य भारत है की प्रभुता और वर्ष अखंडता 2047 तक तथा जिस भारत पद को मैं ग्रहण विकसित करने वाला राष्ट्र हूं बनाने का उसके और कर्तव्यों ये का लक्ष्य श्रद्धापूर्वक तभी निर्वहन पूर्ण करूंगा। होगा जब हम अपने जीवन में संविधान के मूल्यों और आदर्शों को अपनाएंगे। आइए आज इस पावन दिवस पर हम अपने इस संकल्प को दृढ़ करें कि संविधान के मूल्यों एवं आदर्शों को आत्मसात करेंगे और हमारा निर्णय राष्ट्र हित को सर्वोपरि होगा। अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो विकास, न्याय, एकता, बंधुता और मानवीय गरिमा की मिसाल हो। और इसी भावना के साथ मैं सभी उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन राज्यसभा श्री सीपी राधाकृष्णन जी टू काइंडली एड्रेस द डिस्टिंग्विश्ड गैदरिंग। தாயின் அன்பாய்
தந்தையின் அறிவாய் குருவின் ஒளியாய் தாயாய் தந்தையாய் குருவாய் தெய்வமாய் நாம் அனுதினமும் வழிபடுகின்ற புனித பாரத அன்னையின் பொற்பாதங்களை முதற்கண் பணிந்து வணங்கி I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Prime Minister of India, Sriman Narendra Modi ji, Honorable Speaker Lok Sabha, Sriman Om Birla ji, Honorable Union Ministers, Honorable Leaders of the Opposition of both houses, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha, distinguished members of Parliament, Bhai Begno, Sabko Namaskar. On this great day in 1949, our holy Constitution was adopted by the Constituent Assembly of Independent Bharat. I extend my warm greetings to all my beloved Bharatvasis. Since 2015, we have started observing 26th November as the Constitution Day every year, Samvidhan Divas. Now it has become the pride celebration of every Indian. Our great extraordinary leaders like Baba Saheb, Dr. Bhim Rao Ambedkar ji, Dr. Rajendra Prasad ji, Sri N. Gopalaswamy Iyengar, and Sri Alladi Krishnaswamy Iyer ji, Sri K.M. Munshi ji, Durga Boy, Deshmukh ji, and other great leaders made this Constitution in such a way, in its every page, we see the soul of our nation. Our Constitution was drafted, debated, and adopted by our outstanding tall leaders of Mother Bharat in the Constituent Assembly. It embodies the collective wisdom, sacrifice, and the dreams of millions of our countrymen who fought for freedom. The great scholars, drafting committee, and the members of the Constituent Assembly gave insightful thoughts to fulfill the hopes and aspirations of crores and crores. Sir, we are deeply honored and greatly privileged with your esteemed presence. We welcome you, sir, with all our hearts, with deepest gratitude and boundless happiness. Ladies and gentlemen, देवियों और सज्जनों, आज ये केवल एक सुविधा का शुभारंभ नहीं है. This is not just an inaugural ceremony of a facility. ये एक नई पहल है. फ्रांस और भारत और फ्रांस के बीच सहयोग का एक नया स्वर्णिम अध्याय. आइए शुरुआत करें. To begin this morning's proceedings, may I please invite to the podium a leader whose commitment has masterfully integrated SAFRA's operations globally. Please join me in welcoming Chairman of SAFRA, Ross McInnes, for the welcome address. Namaskaram, sir. A very good morning to you. Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Minister of Telangana, Shri Vivant Reddy, Honorable Minister of Civil Aviation, Shri Ramohan Naidu, and Honorable Industry Minister of Telangana, Shri Sridhar Babu, and dear partner, J.M. Rao. Dear partners, dear colleagues, chers amis, I'm deeply honored to welcome you today to the inauguration of our new LEAP engine maintenance facility here in Hyderabad. Your presence today is testimony to the uniquely strong bond between India and France, a bond built over 7 decades of trust and friendship, rooted in a shared ambition of strategic autonomy. This strong bond also reflects the relationship our group, Safran, has forged with your country over these last 70 years. In the defense sector particularly, on which I will focus my remarks, and our Chief Executive, Olivier Andriès, will talk more about civil aerospace. Safran started its relationship with India
in 1953, when we provided the engines for Dassault's Ouragan fighter aircraft. A decade later, our helicopter engines were powering the Alouette used by Indian forces. The 1970s marked the beginning of our cooperation in the space sector, with the full technology transfer of the Viking rocket engine, which led to the Vikas engine developed by the Indian Space Research Organization. It gave India full sovereignty in space launches. In the 1980s, several Safran companies started to establish offices and production sites in the country. A number of sites that has continued to increase very rapidly. And today, I'm proud that Safran is the sole supplier of HAL turboshaft engines, and there are over 1,400 Safran helicopter engines in service in India. India is the #1 market for Safran's inertial navigation and systems, with more than 2,200 systems installed on combat aircraft, helicopters, submarines, frigates, tanks, and artillery guns. In short, on air, land, sea, and below the sea. Indian skies are protected and will continue to be protected by fighter aircraft, Mirage 2000 and Rafale, fitted with Safran engines and other Safran equipment. Our different partnerships with Hindustan Aeronautics Limited are very successful. They